Hello everyone. So on this channel we are posting videos regarding the preparation for NDA exam as well. Now for the year 23 both the exams has been taken up. So we those who are in class 12th right now, जो बच्चे class 12th में हैं, जब वो अपना class 12th complete कर रहे होंगे, that is in 24 April, they will be having a chance of sitting for the first attempt in their NDA exams. Now, in the previous video, I have posted all about the schedules and the process and when the exams are conducted, who conduct the exam, and what is the syllabus and all. So now, further in that series, I am posting a video here which is specifically discussing about the math syllabus and about the exams of maths and how it is being taken. I'll discussing all the topics one by one, that which syllabus do they belong to, are they from class 11th or they from class 12th, and किस किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं. आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं जब आप किसी कंपटीशन के बारे में सोचते हैं. यू शुड ट्राई टू जॉट डाउन योर क्वेश्चंस, जो डाउट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं एक जगह पर, and then try to find the answers to those questions by various means. This video is targeting those children who are right now in class 12th and trying to start preparing for the first attempt of NDA soon after their class 12 board exams in the month of April in year 2024. Now, every year exam is taken two times, in the month of April and in the month of September. So those people who are appearing in 12th class or are appearing in class 12, they got to take the first exam soon after the exam, after board exam, so in the month of April, and second attempt in the month of September. Anyway, that we have discussed before also. So right now I'm talking about uh, the maths exam only. We are just focusing on the exam of maths right now. So you can see here, paper 1, mathematics. So there are two papers of in the exam of NDA, 1 and 2. Now first paper is for mathematics. It consists of 120 number questions, 120 ऑप्शनल क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है. आपको यहां पर उन क्वेश्चंस के आंसर्स का टिक मार्क करके आने हैं. आपको एक ओएमआर शीट फिलअप करनी है. हम किसी और वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कैसे ओएमआर शीट भरी जाती है एंड ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो. पेपर इज ऑफ टाइम ड्यूरेशन 2.5 आवर. आप जनरली जो एग्जाम देते हैं अपने 12th क्लास में, वो 3 आवर्स के होते हैं. This exam is will give you 2.5 hours, and in that 2.5 hours you have to solve 120 questions. So you see, we calculate this. So 2.5 hours means 60 plus 60 plus 30, that's 210 minutes, and you're solving 120 questions in 210 minutes. So if you say we are getting less than 2 minutes for each question to solve here. So 120 questions का अगर आप 2 मिनट देंगे हर क्वेश्चन को, तो 240 मिनट्स हो जाते हैं. पर हमारे पास 240 मिनट्स नहीं है, हमारे पास केवल 210 मिनट हैं. तो हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 मिनट से कम टाइम होता है. Almost, if I calculate for you exactly, so I'm distributing 210 minutes by 120 questions, 1.75 minutes, almost less than 2 minutes for each question. So less than 2 minutes you get. Now that means आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि हमको कुछ क्वेश्चंस छोड़ने पड़े. नाउ द रीजन बिहाइंड दैट, यूपीएससी takes up the negative marking concept
here in each question. That means for every correct answer you tick in your copy, you got 2.5 marks, right? And but for every wrong answer, 0.83 marks are deducted. 0.83 marks are deducted. That means if you select 3 wrong answers, that takes away 1 correct answer along with this. That's a negative marking of 1/3. 33% की नेगेटिव मार्किंग है. अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत मार्क कर देते हैं तो आपके वो 3 क्वेश्चन तो चले ही जाएंगे, साथ में जो आपने एक क्वेश्चन और सही मार्क कर रखा है उसके मार्क्स भी कैंसिल हो जाएंगे. So negative marking plays a very important role in qualifying your exam, because maths exam is a qualifying exam. That means to qualify you need to score 25% of the total marks, and that is of 300. That also means that you have to score 75 minimum marks in maths exam. So NDA का maths exam क्लियर करना है. आप इसका पूरा सिस्टम समझिए. आपको मिनिमम लीस्ट 75 मार्क्स स्कोर करने हैं, दैट इज 25% स्कोर करने हैं. 25% स्कोर आपको मिनिमम पेपर 2 में करना है, जो 600 मार्क्स का होता है. हम उसके बारे में एक सेकंड वीडियो बनाएंगे. नाउ एनडीए यूपीएससी पर कट ऑफ इशू करेगा. That cutoff includes only those which have qualified both the exams, that is for maths exam also and GTA, that is general ability test also. आप जब उन दोनों को क्लियर कर लेते हैं विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तब आप और आपके पास उसके बाद आपकी कट ऑफ आती है. लाइक पूरा एग्जाम ऑलमोस्ट 900 मार्क्स का होता है, 300 प्लस 600. एंड आई हैव सीन दैट जो कट ऑफ हमने एक बाद में इसमें स्लाइड दे रखी है आपको, जहां कट ऑफ लिखे हुए हैं. कट ऑफ लगभग 300 मार्क्स मान लीजिए आप अप्रॉक्स होती है. नाउ अब इस कट ऑफ के ऊपर जो बच्चे टॉप से मेरिट में आते हैं, बिकॉज यूपीएससी फिक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु विल बी टेकन अप फॉर द एसएसबी ऑफ दिस एग्जाम. तो जो लोग बाद में एसएसबी एग्जाम देने के लिए जाते हैं उनका नंबर यूपीएससी ने फिक्स कर दिया. अगर आपके मार्क्स आफ्टर बीइंग इन द कैटेगरी ऑफ कट ऑफ मार्क एंड द क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर आप उस लिमिट में आ जाते हैं तब आप एसएसबी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं. सो अंडरस्टैंड वंस अगेन, 120 क्वेश्चंस होंगे. हर क्वेश्चन के 2.5 मार्क्स हैं. 2.5 आवर का एग्जाम है. पेपर 300 मार्क्स का है. फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू लॉस्ट 1/3 मार्क्स ऑफ 2.5. दैट मीन्स 1/3 क्वेश्चन करेक्ट वाले में से भी, अब ऐसे समझ लीजिए कि आपने 4 क्वेश्चंस चूज किए, 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, उसमें से एक ठीक हो गया और 3 गलत हो गए. सो यू आर नल एंड वॉइड. आपके चारों क्वेश्चंस वेस्ट चलेगा, बिकॉज उन 3 ने नेगेटिव मार्किंग कर उस एक क्वेश्चन को भी खत्म कर दिया. गेटिंग माई पॉइंट, आई गेस. I hope you understand that. So that is how things goes. So and maths exam, but there is a second point, an aspect of maths exam. Those who have done the preparation of maths properly for this exam, they can score very high marks in maths. And but out of 120 questions, if you choose the correct markings of, say 80 questions or something like that. So if you have marked 80 questions correctly, so you have scored 200 marks out of 300. So very easily you can be above the cutoff
just by the help of, a maths exam only. So my suggestion is that you must choose your topics. आपको जिन टॉपिक का बिल्कुल कमांड हो और आप उन टॉपिक से क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से करके जाएं, ताकि आप पहले चूज कर लें पेपर के अंदर कि कौन से क्वेश्चंस मुझको बिल्कुल पक्के से आते हैं, और उनको पहले आपने अटेम्प्ट कर लिया। अपने मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स आपने अपने क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर कर लिए, दैट इज यू हैव स्कोर्ड 25% marks, that is 75 marks. So if 75 marks are given by 30 questions, so 30 क्वेश्चंस आपने स्कोर कर लिए, एंड 30 क्वेश्चंस करेक्ट आपने स्कोर कर लिए। 30 क्वेश्चंस करेक्ट स्कोर करने के बाद अब आप उसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं, चांसेस ले सकते हैं। तो आप ऐसे 4-5-6 टॉपिक्स चूज करिए, हम बात डिस्कस करेंगे उसके बारे में, जिन पर आप कमांड बिल्कुल कर लें अपना, और उन क्वेश्चन से आपको लगभग 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं अगर, देन यू आर क्वालिफाइंग, या क्रॉसिंग द क्वालिफाइंग बाउंड्री ऑफ द एग्जाम। बियॉन्ड दैट यू कैन गो फर्दर फॉर scoring more on that. Maths is a scoring topic, is a scoring subject. You get the similar answers in the GAT paper, history and all these things, current affairs, but maths paper, you know the answer, you get the full marks, you get the correct answer, and it will help you a lot. So now मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या सिलेबस है, मैं कैटेगराइज करता जाऊंगा। यू कैन मेक अ लिस्ट इन योर कॉपी, कौन सा सिलेबस 11th क्लास का है और कौन सिलेबस 12th क्लास का है। अब जो सिलेबस 11th क्लास का है उसकी एक अलग लिस्टिंग कर लीजिएगा, और जो 12th क्लास की अलग लिस्टिंग कर लीजिएगा। नाउ मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि जो बच्चे 10th क्लास में हैं, अगर वो ही वीडियो को देखते हैं, दे कैन ऑल्सो स्टार्ट कीपिंग देयर हैंड्स ऑन द बुक ऑफ 11th class, not on 12th class, and they can do some topics of 11th class. I'll put the videos of all those topics that you can solve slightly in class 11th also. Quadratic equations, complex numbers, sets, relations, functions, the statistics. There's such topic which we can solve in class 11, linear inequations, and it helps you to get sequences, arithmetic progression, geometric progressions. It might help you, to have a edge over the other in the preparation. So आप अपने लिए अपने आप को पूरे 2 साल दीजिए अगर आप क्लास 10th में हैं। अगर आप क्लास 11 में हैं तो अपने टॉपिक ऑफ 11 जल्दी पूरे कर लीजिए और 12th के पहले शुरू कर लीजिए। अगर आप 12th क्लास में आ गए हैं, आपके पास केवल like today is September, so we have got, now the next exam would be in year 24, so we are in the 9th month, 3 months here and 3 months there, almost 5 months in between, जिसमें आपके पास बोर्ड एग्जाम भी देने हैं, आपके पास वक्त कम है। टॉपिक चूज करिए, उनकी इंटेंस प्रैक्टिस करिए, PYQs लगाइए, that will help you a lot. Anyway, so I'm moving on to the syllabus portion of maths exam. तो हम क्या कर रहे हैं इस वीडियो में, हम NDA एग्जाम का पेपर 1 मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, कैसे और क्या करना है। So first topic of the paper is algebra. Now I would suggest you that you should take this topic very seriously. It's a very scoring. It is generally 11th based topic. अब ज्यादातर चीजें 11th क्लास में कर लेते हैं। I show you what concepts of sets, operations on sets, Venn diagram, De Morgan's law, Cartesian products. They all are very simple class 11th question. Equivalence relations, representing a real number line on a line. This you have done in class 10th if you're an ICSC board. Complex numbers. They all are 11th class based topics. Binary operations, arithmetic, geometric and harmonic progression. अब कुछ टाइम हम कुछ टॉपिक arithmetic progression क्लास 10th में भी करते हैं. So you can pick up this topic to prepare for if you are in class 10 for the class 11th and solve the PYQs of
the NDA एग्जाम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दे विल गिव यू आइडिया कि हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस लेवल की करनी चाहिए और कितना हम उसमें आगे हमको पढ़ लेना चाहिए क्लास 7 में ही होने के बावजूद भी। ज्योमेट्रिक एंड हमारी प्रोग्रेशंस आप नहीं कर पाते हैं क्लास 10th में, बट ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आगे के ही टॉपिक्स हैं। अगर आप एक बार एपी को प्रॉपरली कर लेते हैं तो आपको जीपी और एचपी करने में बाद में कंफर्ट रहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद रियल कोफिशिएंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम क्लास 10th एसएससी में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और उसका कुछ कॉन्सेप्ट सीबीएसई बोर्ड में भी है जहां हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स एंड द रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स। नाउ दिस गोज इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद रियल कोफिशिएंट्स इन क्लास 11। एंड अगर आपके पास कोई एसएससी आईसी बोर्ड की बुक है उसमें क्वाड्रेटिक बहुत अच्छा दे रखा है और आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इसके क्वेश्चंस को चूज करने में। In equations, PNCs is a class 11 topic, binomial theorem and applications, logarithm and their application. Logarithm ICSE बोर्ड में क्लास 9th में भी है, सीबीएसई बोर्ड में लोगारिथम कहीं पर भी नहीं है, बट 11th क्लास की बुक में पहले लोगारिथम था, अभी हमारे कोर्स से कट गया है 11th के कोर्स से। तो आपको कोई एक बुक ऐसी लेनी चाहिए जिसमें कि आपको लोगारिथम के कुछ अच्छे क्वेश्चंस पहले से करे हुए मिल जा रहे हो। सो प्लीज रिमेंबर एल्जेब्रा is a class 11th topic and with traces of topics from class 9th or 10th as well. So my suggestion, we can always start preparing from this unit of algebra. The second topic is matrices and determinants. तो अगर आप बात करते हैं जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से क्लास 10 का 11th कर रहे हैं उनको मैट्रिसेस पढ़ने को या डिटरमिनेंट्स पढ़ने को नहीं मिलते हैं क्लास 12 तक, तो ये टॉपिक इन फैक्ट क्लास 12 बेस्ड है। लेकिन आईसीएसई बोर्ड में क्लास 12 बुक does have the questions on matrices, not on determinants, only on matrices, and that too very basic. We generally deal with 2 by 2 matrix and all, but अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे और किसी की हेल्प लेंगे, अगर मैं इसकी वीडियोस पोस्ट करूंगा आपको यहाँ पर चैनल पर, तो आपको बहुत आराम से एक टॉपिक करने को मिल जाएगा मैट्रिसेस, बट ये क्लास 12 बेस्ड टॉपिक है। आई फाइंड दैट क्लास 11 मैथ्स इज मच मोर into this exam as compared to class 12 topics. So Cramer's rule and matrix methods, equations को solve करना by 3 unknown equations and all, class 12 based topic है। class 12 जो बच्चे कर रहे हैं उनको इस टॉपिक को अपनी बुक आर डी शर्मा से या एम एल अग्रवाल से प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड देन इसके पीवाईक्यूज लगाने चाहिए। आपका मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स का पोर्शन स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। आप इसको मैं आपको इसके 4 स्टार्स देता हूं। ट्राई टू कीप दिस टॉपिक इन योर क्वेश्चंस, इन योर बंच ऑफ क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन अटेम्प्टेबल है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और यहां से अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। So comes trigonometry. Now trigonometry बच्चों का एक सोर पॉइंट होता है, बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री हमेशा परेशान करता रहता है। दे आर नॉट इजी इन द टॉपिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उनको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमको बहुत परेशान कर रही है एंड दिस इज द क्लास 11 टॉपिक बिफोर आई गो अहेड विद दिस। I says to you that you can choose ML Agrawal, Understanding Mathematics, or I can take R.D. Sharma as well. आप इन दो किताबों में से किसी एक से भी
पहले ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पढ़िए। इधर इन क्लास 11th आपने पढ़े होंगे। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप इन दोनों बुक से बेसिक्स पढ़िए ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि 10th क्लास से आगे के हैं, बिकॉज द एनडीए एग्जाम इज नॉट एक्चुअली you know 10th class exam. It is basically an exam of the syllabus of class 12. तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लास 11th के और 12th के क्लियर ज़्यादा होने चाहिए, and we should not stuck up to the level of class 10. You'll find the questions, you just go to the PYQs or some question papers from the previous years. You will find out the topics are from 11th and 12th level. They're not from class 10 level. So we should have this is the class 11 book topic. आपको इस सब को 11th क्लास की बुक से एक बार अच्छे से करना चाहिए। फिर उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज की लिस्टिंग करिए एंड कीप अ लिस्ट विद यू। सो आई एम टॉकिंग अगेन लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। आर डी शर्मा लीजिए या एम एल अग्रवाल लीजिए। Solve the basic question, then pick up the higher questions. Pick this in this manner. And the studying trigonometry from these books, and do not go for studying trigonometry from those, Aryant and other books initially. Aryant is good for having the questions, having the PYQs. Aryant is not good for studying in detail. Aryant will not clear your doubts. These books, all those which proclaim that we have this question, that question, they will definitely provides you solutions and the questions, but they will not provide you the content and the topic and the theory of that topic. For that preparation, you must go for the textbook to study with. Two-dimensional and three-dimensional geometry, class 12 topic. क्लास 12 का टॉपिक है। क्लास 12 में पढ़ेंगे इसको। अब आई विल नॉट सजेस्ट यू to keep this topic in your bunch of questions which you are going to solve anyhow. I just give this topic 2 stars for that matter. But जब आप 11th क्लास की आर डी शर्मा खोलेंगे तो जो सेकंड बुक है रादर, उसमें आपको डिटेल में 3D और 2D के टॉपिक्स मिलेंगे पढ़ने के लिए। वहां पर एक बार आप उसको अच्छे से स्टडी करिए, तभी आपको यह आइडिया होगा कि आपको किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आगे लेकर जाना है। ऑल राइट, सो अभी मैं इसके बारे में आपसे कोई डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ। आई पोस्ट द वीडियोस टॉपिक वाइज वन बाय वन। सो जब उसका आपको इसके वीडियोस मिलेंगे तब हम इस बारे में बात करेंगे डिटेल में। और बट दिस टॉपिक इज, आई मीन, दोज हु आर नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स, for them this topic is little difficult. They might skip this topic, but is there in the syllabus? Those who are math students and who are studying properly for class 12, they can always there are some topics here. I just find out, you see here, the distance formula. Now this much enclosed portion is 11th class coordinate geometry. Well, you move on from here and till here, it is class 12th
three-dimensional geometry. So what I suggest to you is that you should take up the first part of this topic that till जहां मैं कह रहा हूं कि ये क्लास 11 तक का टॉपिक है, पहले उसको पिक करिए और पहले उसको देखिए कि आप उन क्वेश्चंस को कितना अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं और आपको कितना समझ में आ रहा है या क्या आपकी पोजीशन है। जो लोग मैथ्स की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक इजी है, लेंदी टॉपिक है, बहुत ज्यादा काम करने का है इसके अंदर। सो एक बार मेरे सजेशन इज दिस that you should divide this entire portion into two parts. The first part is till the axis of a conic, and the second part is then from the three-dimensional space. So जो पहला पार्ट है एम एल अग्रवाल या आर डी शर्मा से करिए। आर डी शर्मा का 11th क्लास का टॉपिक निकालिए, स्ट्रेट लाइंस, और उसके बाद फिर कोनिक्स एंड पैराबोला एंड हाइपरबोला। चाहे इसको आप आर डी से भी कर सकते हैं, चाहे इसको आप एम एल अग्रवाल से भी कर सकते हैं। पहले आप now my suggestion is that do not start solving questions immediately by seeing the solution. पहले आप अपना बेस तैयार करिए, पहले टॉपिक को पढ़िए, पहले जो पहले आपके टॉपिक्स हैं, जो थ्योरी है, उनको क्लियर करिए। उसके बाद फिर आगे जाइए क्वेश्चंस बनाने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए। प्रैक्टिस पहले मत शुरू करिए, पहले टॉपिक को पढ़िए। अपनी तैयारी एक साल पहले शुरू करिए। जब आप तैयारी को एक साल पहले शुरू करेंगे, आपके पास वक्त है, आप क्वेश्चन को याद नहीं कर रहे हैं, आप सोल्यूशन को याद नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा बच्चों, क्वेश्चन तो नया आएगा। अगर आपको टॉपिक क्लियर होगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन चाहे कोई भी आ जाए आप सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। You might learn 30 questions, 50 questions and read the solution. It will not help you. ये तरीका ठीक नहीं है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। So my suggestion is that अपनी तैयारी के लिए अपने आप को कम से कम एक साल का वक्त दीजिए और पहले किसी टेक्स्ट बुक से इन टॉपिक्स को बहुत सिंसियरली और प्रॉपरली बनाइए और करिए। वीडियोस में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यू विल गेट द वीडियोस फॉर ऑल दीज टॉपिक्स वन बाय वन, which will be helping you to clear a topic for class 11 and as well as for the NDA preparation. So my suggestion again, I repeat, जो 11th क्लास का टॉपिक है that is straight line and circle and parabola and ellipse, इन सब की एक प्रॉपर नोट्स बनाकर, इन सब के नोट्स बनाकर तब इनकी स्टडी करिए। अगर आप इनकी नोट्स बना के स्टडी नहीं करेंगे तो आपका चैप्टर तैयार तो नहीं होगा और आप सिर्फ किसी भी एक बुक से जिसमें कि क्वेश्चन दे रखे हैं, आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप सॉल्यूशन देखते रहेंगे। इट विल नॉट हेल्प यू इन द एग्जाम। जो लोग बेस से तैयारी करते हैं, जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, दे गेट द करेक्ट आंसर इन द एनडीए एग्जाम, बिकॉज वहां पर बच्चों वक्त बहुत कम होता है। जस्ट गेट 1.5, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन को समझ में आ गया, आपने रफ में सॉल्व किया, नहीं गेट द आंसर आउट ऑफ इट। दैट इज हाउ यू मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग। सो सेशंस को याद रखिएगा, नोट करिए ये पॉइंट, इस टॉपिक के दो पार्ट कर लीजिए। एक अपने टॉपिक में दो पार्ट पढ़ लीजिए, 11th क्लास का टॉपिक अलग, 12th का टॉपिक अलग, एंड स्टार्ट सॉल्विंग द टॉपिक ऑफ क्लास 11, writing the topic of class 11 on one side and 12th on one side। जो 11th के टॉपिक हैं वो आपको पहले तैयार करने हैं, उनकी थ्योरीज करनी है। अपने पास एक आर डी शर्मा रखिए, अपने पास एक एम एल अग्रवाल रखिए, चाहे वो आईएससी बोर्ड की हो चाहे तो बेटर है। अगर आईसीबीएसई की है तब भी कोई बात नहीं है। आईएससी बोर्ड की बुक में कुछ ज्यादा टॉपिक्स हैं 11th क्लास से, सो यू कैन कीप बोथ द बुक्स विद यू एंड देन वी कैन फर्दर डिसाइड हाउ टू गो along with these topics। डिफरेंशियल कैलकुलस। सो कैलकुलस का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चे हाथ खड़े कर देते हैं कि ये तो हमसे नहीं होगी और कैलकुलस तो हम क्यों ही करेंगे और कैलकुलस करना हमारा काम नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगी, एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। माय एडवाइस इज दैट आप इस कैलकुलस के कुछ पार्ट्स अलग अलग कर लीजिए। सो आई एम अंडरलाइनिंग देम पार्ट्स। ये टॉपिक
11th एंड दोनों पार्ट से आया है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, composite functions one to one, on to an inverse function, notion of limit, standard limits, continuity, यहां तक। नाउ यहां तक 11th क्लास का टॉपिक है, आपकी 11th की बुक में है, चाहे वो एमएल अग्रवाल हो, चाहे वो आर डी शर्मा हो। और उसके आगे जो डेरिवेटिव शुरू होता है ना, कुछ टॉपिक थोड़ा डेरिवेटिव 11th क्लास की बुक में भी है, वहां से डेरिवेटिव सीख सकते हैं, बट क्लास 12 डेट में दे रखा है हमको। सो डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ पॉइंट, ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ सम, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल, ये सब 11th क्लास के टॉपिक्स हैं, 11th क्लास की बुक में है, दोनों ही बोर्ड्स में। आई थिंक यहां तक का सारा काम आप 11th की बुक से कर सकते हैं। फिर जो बाकी एओडी है एंड मैक्सिमा मिनिमा है, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं, ये सारे 12th क्लास के टॉपिक्स हैं। So repeat once again, concept of real valued function, domain, range, graph of a function, composite functions, one to one, on to an inverse function। आईसी बोर्ड की एमएल अग्रवाल से पढ़ाई करिएगा। I again advise you writing it here। आईएससी बोर्ड की एमएल अग्रवाल से पढ़ाई करिएगा। उस टॉपिक में, उस बुक में ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से दे रखे हैं। उसमें आपको वन टू वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनवर्स फंक्शंस, नोशन ऑफ सब आराम से मिल जाते हैं। देन लिमिट्स, स्टैंडर्ड लिमिट्स, कैलकुलस का फर्स्ट टॉपिक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, algebraic operations and continuous functions, ये सब उस बुक में दे रखा है। Derivative of function at a point, geometrical and physical limitations of derivative applications, derivative of sum, product and quotient of function, ये सब का सब हमको आपको 11th क्लास की बुक में आराम से मिल जाएगा। जब यहां से हम बात करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अ फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस एंड हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शंस, यहां से क्लास 12 का टॉपिक शुरू होता है। क्लास 12 की आर शर्मा ले लीजिए और उस बुक से इसको सॉल्व करिए। दैट विल ऑलवेज गिव्स यू अ बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। कैलकुलस इज अ डिफिकल्ट चैप्टर। कैलकुलस हमसे जनरली आराम से नहीं होती है एंड चिल्ड्रन टेंड्स टू लीव दिस, बट आई सजेस्ट यू, अगर कैलकुलस आपको आ जाती है तो आपका बहुत कम टाइम लगाकर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, एंड दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। जहां पर आप कम टाइम लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करें, उस क्वेश्चन को हमेशा करने की कोशिश करिए। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, आई गिव देम 2 stars। टफ टॉपिक हैं, 12th क्लास के टॉपिक्स हैं। ट्वेल्थ क्लास के टॉपिक हैं, टॉपिक्स आर टफ। बुक लीजिए आर डी शर्मा की और उस बुक की हेल्प से इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब मैं इस बारे में भी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सब का सब क्लास 12 का टॉपिक है। इंटीग्रेशन बिल्कुल बाद में करिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी बिल्कुल बाद में करनी चाहिए। जब हम 12th क्लास के टुवर्ड्स अक्टूबर पहुंच जाते हैं, तब हम पहुंच पाते हैं इंटीग्रल्स पे और डिफरेंशियल इक्वेशंस पर। सो इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं
ट्राई टू कीप इट इन दैट मैनर कि आप इसको अभी इंटीग्रल कैलकुलस को और डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने कैलकुलेशन से थोड़ा सा बाहर रखिए और इनको बाद में करने की कोशिश करिए। ये टॉपिक्स ऐसे नहीं हैं जिनको कि अपने आप उस कंपल्सरी बंच में इंक्लूड करें। सेम फॉर वेक्टर एल्जेब्रा, जो लोग फेस की पढ़ाई करते हैं वो थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़ते हैं अपने फेस की टॉपिक में, अदरवाइज इट इज अ क्लास 12 टॉपिक एज वेल। ये भी क्लास 12th टॉपिक है। क्लास 12 टॉपिक्स हम 11th क्लास में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ना ही आपको जरूरत है। इनको तो आप जब 12th के हाफ से आगे पहुंच जाएं तब आप सॉल्व करना शुरू करिएगा, ताकि आपको कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिल जाएं। कभी अगर कोई क्वेश्चन आपको मिस हो रहा है, लेकिन ऑलवेज ट्राई द क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा आल्सो, entirely class 12th टॉपिक। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, हम अपने सिलेबस के लास्ट पॉइंट पर आ गए हैं। नाउ स्टैटिस्टिक्स की एक बहुत वाइड रेंज होती है जो शुरू होती है 10th क्लास की बुक से या 9th क्लास की बुक से एंड गो टिल द क्लास 12th टॉपिक ऑलवेज। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में से क्वेश्चंस चूज करने हैं ना, आई मार्क सम क्वेश्चंस जो कि क्लास 12th के क्वेश्चन है। क्लास 12th क्वेश्चन है वेज थ्योरम, random variable as a function, ये सब क्लास 12 टॉपिक हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इवेंट्स, एलिमेंट्री एंड कंपोजिट इवेंट्स। इफ यू फाइंड आर शर्मा ऑफ क्लास 12 विद यू, try that book here, try that book to have a complete say of probability। probability की एक सबसे खास बात यह है कि अगर आपको probability का क्वेश्चन आता है, it will not take more than 30 seconds to solve the question, but अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, it will keep on eating your time। So unless you are very much sure that you can solve the question properly, we should go for solving the question of trigonometry, probability and statistics. So here you see the easier part is this: histogram, pie charts, frequency polygon, class 9th and 10th syllabus it is. Then CF distribution, frequency distribution, all these are class 9th questions, right? देन मैं नीचे आता हूं थोड़ा सा, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन 12th क्लास में आ जाइए, डिटर्मिनेशन एंड कंपैरिजन क्लास 12, कोरिलेशन रिग्रेशन क्लास 12, probabilities in both the books 11th class also and 12th class also, so we should be very careful about कि हमको कैसे कहाँ पढ़ाई करनी है। बट अल्टीमेटली आपको 11th क्लास और 12th क्लास दोनों की बुक से प्रिपेयर करना पड़ेगा। उस केस में ही आपका सॉल्यूशन, आपका एक बेस टॉपिक तैयार होगा। आई वुड सजेस्ट दैट स्टैटिस्टिक्स को आप अभी आधा पोर्शन करके 11th क्लास का स्किप कर सकते हैं। जब आप 12th क्लास में पहुंच जाएंगे, उसके ही सेकेंड हाफ के बाद प्रोबेबिलिटी करना शुरू करिएगा। बेस थ्योरम एंड बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड random variables and complementary events, all these are class 12 topic। so आधा पार्ट तो इसका 11th क्लास का है एंड आधा पार्ट इसका 12th क्लास का है। जो पार्ट 11th क्लास से आया है वो आप 11th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर सकते हैं and you should try to cover it up as early as possible because it's a very scoring topic of your NDA exam। So this is the course we have in our NDA exam। In the next slide I have written down the number of questions topic wise, कौन से टॉपिक हमको कितने मिल रहे हैं और हम कैसे उनको चूज कर सकते। I've taken off 3-4 years। I will put the questions of 22 and 23 in the next video। Right now I'm digging it from 19 to 21। so you can see here very clearly that जो बाइनरी सब algebra चल रहा है, I am marking up algebra, this all algebra, set theory, complex number is also algebra,
So till here it is all algebra, and we're getting a sizable amount of questions in the board in the ND exam. 4 here, 5 here. Can you see that 5 questions from quadratic? So what I am suggesting that it is not sure, ND is not giving you any pattern of the questions you're going to get in the exam. The pattern might be rational, it might change, it might not change. The year 19 you had 8 questions, a bumper amount of questions from same chapter. If you correct all the 8 questions, you got 20 marks from this chapter only. What is better than that? See the sequence series, you got 8 questions, second exam 2019. What I see is that sequence series are giving us many questions. 9 questions from probability, 5 questions from PNC, and 4 questions from binomial theorem. So please try to understand these these topics are going to give you a sizable amount of questions in the exams. So algebra is a very, very important unit. I again go back to algebra, the first, and mark it. Very important. As we move on further, binomial theorem is an algebra topic of class 11. Quadratic equation is a very good topic for the exam. Complex numbers, quadratic sets. You can see here sequence series. You have got quite a good amount of questions from this topic. So आपने class 10 में arithmetic progression solve करी है, उसी को आगे continue करना है. These questions, the topics are, so I am marking a questions here, topic here. आप उनको note करिए अपने पास कि कौन से topics आपको ज़्यादा करने चाहिए. Set theory, complex number, quadratic equations, sequence series, PNC, probability. Binomial theorem I can have a doubt about, but you see all these questions, you can, my god, 6 questions from set theory, 9 questions from probability. 9 questions from probability leaves give you a very good chance of scoring at least 8 questions or 7 questions from 9 to score good. And then PNC has got 5 questions, and here it goes 4 questions. So there are quite a good amount of numbers of questions we're getting from these topic in the exam. Move on further. So again, I mark a chapter, real numbers and functions. So function is another topic you must take care of. इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे काफी सारे क्वेश्चंस हर साल करने को आ रहे हैं. The other one I'm seeing here is applications of derivative. I hope you understand this topic. This is a class 12 topic as such, but I'm not getting much questions from differentiation, but limits derivative are giving me good questions. So I'm marking up this chapter and this chapter. And as I move forward, trigonometry. Oh my god. Got 18 questions from trigonometry or 11 questions from trigonometry. With no time in the previous years, we got less than these questions. Only once in 20. Um, and you got this 5 questions in and design equations, but otherwise we are always getting quite a good amount of questions from these chapters. I can see that differential equations are also giving me good amount of questions here. Please note these topics in your copy so that you may emphasize on these topics later on, and we can talk about this in detail later. So all these are, so this was my like we have kind of sort out the questions and the numbers from the other questions. As I move further, you can have questions from vector and 3D geometry. Vector and 3D goes hand in hand.
and is a favorite topic of the people to teach in class 12. You must also you see here that ellipse parabola don't have much amount of questions in the exam. You might give them a skip, but do not try to skip straight lines. You must do the topic of straight lines properly. But if you don't have much time to solve them, you might give them a skip, because the remaining topics might get you across the qualifying marks or the cutoff marks very well, provided you are doing these questions properly and doing these topics also properly. I'm suggesting again, आपको अपने पास अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए और अपने टॉपिक्स को पहले चूज करना चाहिए। आप पहले टॉपिक्स लिख लीजिए जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसके बाद फिर उनमें से पहले वो करिए जो 11th क्लास के टॉपिक्स हैं, फिर वो करिए जो 12th क्लास के टॉपिक्स हैं। Only when you do this in this manner, you can have a proper split of that syllabus in which you can do work. सो माई सजेशन फॉर यू, अपने पास एक रजिस्टर बनाइए और उसमें अपने लिए सजेशंस को खुद नोट करिए। तो पहला सजेशन नोट करिए भाई कि आपको टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं, वो बाद में देखेंगे हम। और उनमें से कौन सा 11th क्लास का है और कौन सा 12th क्लास का है, उसको पहले नोटिस करिए और उसके बाद फिर अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाइए। So you can see here I have marked the topic arithmetic progressions, all algebra of class 10, class 11, sorry, algebra, arithmetic and geometry, trigonometry, statistics. This is a class 12 topic. Trigonometry is 11th class topic. I'm not sure about mensuration is class 10th topic. Arithmetic is also class 10th and 11th topic. So you see, these topics are few important topics. I have listed them for you. Try to make a note in your copy about these topics. Try to find the necessary materials for this topic. Try to write down and note down the material you are going to procure for these topics. Look for the videos on this channel. By and by, I will be posting up more videos regarding this. The qualifying marks for the NDA exam is 25%. That comes out to be 75 marks for the maths exam and 150 marks for the GAT exam. So 150 and 75 is 225 marks. 225 marks gets you cross the qualifying marks. When you cross the qualifying marks, then you have a fight in the merit list. That's those were the merit list, and then you are there are three stages you may remember. First thing is that you need to qualify, then you need to be above the cutoff mark, then you should be in the merit list. So the three ways filter which the UPSC is applying for this. You can see the NDA cutoff marks here. So for 2022 it is 360. Now 360 is out of 900 is how many percent? It is approximately 40%. 343 again is approximately 40%. 355 is 39%. What you are seeing the pattern, marks are hovering around 40%. 342 divided by 900, it is 38% to be exact. See our pattern here, no? They are 40%. Let us see.
further 338, it is 37%. Again 38%, very near to this. 32%. So what you can notice here, the marks, the cutoff marks are generally, you know, they are in a bracket of 38 to 40%. तो अगर आप 40% मार्क्स सिक्योर करने की पोजीशन में आते हैं जीएटी और मैथ्स को मिलाकर, तब आप क्वालिफाइंग पोजीशन में अपने आप को लेकर आ जाते हैं. After that, you go on for fighting for the merit and name in the SSB list, and that's different case. But अपना टारगेट 40% करिए ना, इसका मतलब ये हो गया कि बहुत हाई स्कोरिंग एग्जाम नहीं होता है. इट्स अ वेरी लो स्कोरिंग एग्जाम. लो स्कोरिंग से क्या मतलब है? क्योंकि कट ऑफ बहुत लो है. कट ऑफ लो मतलब क्या होता है? हाई स्कोरिंग है, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए कट ऑफ लो हो जाती है. पेपर का लेवल थोड़ा सा हायर है, कट ऑफ और लो हो जाएगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन विच यू फेस. नाउ once you are in the preparation mode of NDA exam, you must always try, you see that all these cutoffs for 21 and 20 and all these 229 for 16. But as we are advancing in the years, the cutoff marks are increasing. So 221, and earlier I had from 16 and all, things are in that order. So generally we are near 40% for the cutoff. Sometimes children ask the question that how many attempts they have got to, how many attempts they can take for NDA exam. So what I have noticed is that now इसका सिस्टम तो समझिए पूरी बात का. जब आप एनडी का एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, जब आप फर्स्ट एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं जिससे आप 12th में अपीयर हो रहे हैं, और आप फरवरी के एंड में और मार्च के मिड में एग्जाम देकर निपटते हैं, और पहला एग्जाम अप्रैल में हो रहा होता है, ये आपका एनडीए 1 हो गया. जो अभी 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, एनडीए 1 2024 में किसी भी समय अप्रैल के मंथ में हो जाएगा. मान लीजिए अप्रैल एंड के पास में हो जाएगा. आप जब 12th क्लास करते हैं तो आप ऑलमोस्ट you are near to 18 months and some 18 years and more than 18 years. Now जो सेकेंड एग्जाम होता है एनडीए का, एनडीए 2 जो होता है, वो सितंबर के सेकेंड वीक के आसपास होता है. अगर इस समय तक आपकी एज 19 ईयर्स 6 मंथ से क्रॉस नहीं हुई है, you can give the second attempt also. So आप इसका एक बात मोटी से समझ लीजिए, आपको ऑन द होल एनडीए के 2 अटेम्प्ट करने को मिलते हैं. आई डू नॉट थिंक सम पर्सन कैन गेट 3 अटेम्प्ट्स ऑफ एनडीए. बहुत रेयर केस में अटेम्प्ट्स 3 हो सकते हैं, अदरवाइज अटेम्प्ट्स 2 ही होते हैं. जो पहला अटेम्प्ट है वो अलॉन्ग विद द बोर्ड्स होता है, जो आपका प्रिपेयर नहीं होता है, आप सिर्फ फील देने के लिए एग्जाम में बैठते हैं. जो सेकेंड एग्जाम है वो आपका रियल एग्जाम होता है, जिसमें आप 6 मंथ्स की थॉरो प्रिपरेशन कर सकते हैं या दे सकते हैं इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए. नाउ वन मोर थिंग कमिंग टू माय माइंड, after 12th class, those who are with PCM group, they keep on trying for the NDA, for the engineering examinations, or they have other options in their mind. So
जिन लोगों को एनडीए का एग्जाम का ही जुनून है, जिन लोगों को दून अकेडमी में ही जाना है, IIM अकेडमी में जाना है, तो आप एनडीए की तैयारी जब कर रहे हैं, डू नॉट थिंक कि हम जेई की तैयारी करते करते एनडीए की तैयारी भी कर लेंगे, बिकॉज जेई की तैयारी का पैटर्न और प्रिपरेशन फॉर एनडीए एग्जाम्स आर नॉट द सेम थिंग. दे आर different aspects for each other. So what I should do is that I should try to keep those 6 months after the month of April for a very thorough preparation, because जो इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं वो आपके उससे पहले ही हो चुके होते हैं काफी सारे, बिकॉज अगस्त तक सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑन हो जाते हैं. बट जो एनडी का सेकेंड एग्जाम होता है सितंबर में, आपके पास उस एग्जाम के लिए अप्रैल से लेकर सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स का एक बहुत कंप्लीट टाइम होता है, जिसमें आप बजाय वेस्ट करने के, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज के एग्जाम देते हैं, वीआईटी का दिया, एमआईटी का दिया और एसआरएम का दिया, एंड देन दे सिट फॉर 6 months or 5 months to join the college in the month of September. My suggestion is that in that 6 months time you can prepare this exam very thoroughly, और एक बार कॉलेज जाने से पहले सितंबर के मंथ में अपना सेकेंड अटेम्प्ट बहुत सीरियसली दीजिए, क्योंकि जो पहला अटेम्प्ट होता है ना वो आप बोर्ड के संग देते हैं, आप उतना सीरियस नहीं हो पाते हैं. द सेकेंड एग्जाम ऑफ द ईयर इज एग्जाम फॉर यू. उस एग्जाम को आप बिल्कुल सीरियसली लिखने बैठिए, बिल्कुल सीरियसली लिखिए, अटेम्प्ट करिए सीरियसली, क्योंकि आप बचे हुए 6 मंथ्स में इंटेंस पढ़ाई करके उस एग्जाम तक पहुंचने का आपके पास टाइम होता है, आप कर भी सकते हैं. That is my session for you. I will post more videos. I will post another video for the syllabus of GAT. तब तक के लिए I'll take care off. I understand that many of you must having more questions in your mind. Does not matter. If you got more questions, I'll come back with the another video to uh, put the doubts down in your minds. I will have more suggestions regarding the preparation and all. My next video will be for the syllabus of GAT exam. This video was for the syllabus of maths exam. I again take a recap of this exam. So the exam is of 120 questions, 2.5 hour, मैक्सिमम मार्क्स 300 होते हैं. हर एक अच्छे करेक्ट क्वेश्चन के 2.5 मार्क मिलते हैं. हर एक रॉन्ग आंसर पर 0.83 का डिडक्शन हो जाता है. एग्जाम इज नॉट अ पासिंग एग्जाम, इट्स अ क्वालिफाइंग एग्जाम. सो क्वालिफाइंग मार्क्स आर 25% ऑफ 300. इन बातों को ध्यान रखिए, टॉपिक्स को नोट करिए, उनकी कैटेगराइजेशन करिए और फिर उसके बाद मैटर इकट्ठा करिए. आई विल पुट मोर सजेशंस इन माय नेक्स्ट वीडियो, हाउ टू कलेक्ट द मटेरियल for studying class 11 topics of NDA exam past paper 1. जिन बच्चों को फौज में जाना है, एनडी का एग्जाम क्रैक करना है, those who are dreaming of joining the army, NDA is the best option for them at this point. अपने आप को फोकस करिए, अपने दिमाग को, अपने ड्रीम को अपने आंखों के सामने रखिए और उसी ड्रीम के लिए दिन रात काम करिए. अभी की मेहनत है, अभी अपने आप को इस काम में झोंक दीजिए. अपने आप को, अगर आप 10th क्लास में भी हैं और आप ड्रीम करते हैं एनडी एग्जाम में जाने की, तो अभी से काम करना शुरू करिए. मेरे ये वीडियो जो बना रहा हूं मैं आपको इसमें उन बच्चों के लिए भी सेशन दे रहा हूं जो 10th क्लास से ही आगे बढ़ रहे हैं. जो बच्चे 10th क्लास के मिड तक पहुंच जाते हैं तो उनके कोर्स का 3/4 से ज्यादा कंप्लीट हो चुका होता है, एंड दे हैव एम्पल टाइम to prepare for. They can spit out some time to prepare these topics which are there to be in the NDA exam, and this will help you a lot in the class 11th and class. So like complex number, set relation functions, आपको वो 11th क्लास में पढ़ने हैं, आपने थोड़ा सा अभी पढ़ लिया अगर, it will help you immensely and you got more time. That my suggestion is that so that you may be clearing up the topics of class 12th also in class 11. That's how you should try and plan your studies for this exam. Wait for my next video. Till then, अपने ड्रीम को जिंदा रखिए, अपने अंदर जज्बा बना के रखिए, हौसला लीजिए, अपने दोस्तों से बात करिए,
अपने संग कुछ ऐसे दोस्त रखिए जो आपसे सेम इंटरेस्ट के हों, जो खुद भी किसी एग्जाम को लेकर उन्हें अपने आप के अंदर गांठ बांध ली कि हमको ये करके ही दिखाना है। आपके संग अगर आपके आसपास ऐसे कुछ लोग होंगे जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, जो खुद भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप देखिएगा आपके मन में पढ़ाई के लिए एक फीलिंग आएगी, वाइब्स आएंगी, आप ज्यादा पढ़ाई करना शुरू कर पाएंगे। I'll talk to you later about this. Video is getting longer. So, जय हिंद मेरे बच्चों, मेहनत से पढ़ाई करो, अपने ड्रीम को राइज करो, एक बहुत ऊंचा सपना देखो और उसके लिए काम करना शुरू करो। छोटी मोटी बातें मत देखो और बिना सपना देखे जिंदगी को मत जियो। वो आपका देखा हुआ सपना आपकी जिंदगी को डायरेक्शन देता है, वो आपको बताता है कि आपको क्या करना है और आप कितना कम कर रहे हैं उस सपने के से कंपैरिजन करने पर। I will take up the topic, continue in the next video. Till then, bye bye. Jai Hind.